Hello everyone, welcome to the second session of JSP. In last session we have seen the basics of JSP, the working of JSP life cycle and the request, how the request is processed. Now today we are going to see JSP element and JSP directive. So let us begin. There are basically three types of JSP elements available. The first one is JSP directive, second is JSP scripting element, and third one is action tag. Okay, so now today we will discuss JSP directives and JSP scripting element. Action tag will be discussed later on. So under JSP directives, we have page directive, include directive, and the third one is tag library directive. So tag library directive, I will make the another video regarding that. Now under scripting element we have traditional approach and we have modern approach. So nowadays this modern approach is generally used, that is expression language scripting element. So under traditional approach, that is scriptlet tag, expression tag, declaration tag, and the comment tag. So in the last session we have seen that how our JSP code is written inside our HTML code. So this is how it is written. So you have to use this tag, that is your scripted tag, in order to write your Java code. Okay, so let us begin by understanding the basic about the scripting element. So there are basically different types of scripting element available. So the first one is scriptlet tag. So scriptlet tag is the basic under which we write our Java code. So open angular bracket percentage, then after the Java code that we are going to write over here must be placed inside this scriptlet tag. Okay, so for example, let us see the example stated below, that this is our HTML JSP page which contains our HTML as well as our business logic. So the presentation will be separated by this HTML tag and our business logic will be handled by this our JSP tag. Okay, so JSP tag, that is here we have simply printed hello on our browser. So directly you can use out.print and simply hello ending with semicolon. So whatever we write under this scripting element will be printed on our browser, that is out. Now we will see this, what is out. So this is basically the implicit object that we can directly implement in our JSP page. Okay, so implicit object means what? uh, some objects that are predefined in our servlet, that for example, right, if you want to print anything on our browser, we are going to use the print writer class. We were creating the object of that print writer class, and then after we are using inside our servlet page. Now some objects that are predefined, we can direct inside our servlet, we can directly use inside our JSP पेज. मतलब होता क्या है कि जैसे आउट ऑब्जेक्ट है सर्वलेट का, हमने HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट करके उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स उसका ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ठीक है। तो वो जो सर्वलेट के अंदर हम अलग से क्रिएट कर रहे थे वो सारे ऑब्जेक्ट, वो बने बनाए ऑब्जेक्ट्स हम डायरेक्टली ये JSP पेज के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमें कहीं भी ये जो आउट ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करना पड़ता। सो डायरेक्टली ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट हम हमारे पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो स्क्रिप्टलेट टैग इज यूज टू एग्जीक्यूट योर Java source code inside our JSP page. So here you can declare variable, here you can declare method, and so on. Okay, the second one is JSP expression tag. So see the syntax here, out.println. Now instead of using this out.print, we can directly use equals to sign. So equals to sign specifies what over here. This equals to signs mean it will give the JSP container that you have to print something on your browser. So suppose if I want to print 10 on the browser, so I can simply write using scriptlet tag equals to 5 plus 5 without ending with semicolon. So it will directly print 10 on your browser. So equals to expression here work as a output stream. So whatever you want to write on your browser, you can simply use equals to, that is what a expression tag over here, or you can directly use out object, that is implicit object. So basically the JSP expression tag is written to the output
stream of the response object. So response object here is also an implicit object that we are defining inside our servlet. So we do not need to write out.print to write the data. You can directly use this equals to sign. So remember the syntax, okay, and remember one thing, that we do not write or we do not end our statement, that is expression statement, with semicolon. So as stated earlier, inside our scripting tag we were ending with semicolon, but inside our expression tag we are not ending with semicolon. So wherever you use equals to sign, do not end with semicolon, otherwise it will give you an error. Okay, so mainly when you want to print anything, any value or variable or method, you can directly use this JSP expression. The third tag is JSP declaration. So when you want to declare any field or method, so you can directly declare inside this tag. So simply for that you have to use one exclamation mark over here. So open angular bracket, percentage, exclamation marks, and then after field or method declaration. For example, see here, if I want to declare integer a equals to 5, then I will define this way. Okay, so the container will automatically define that this is something we called as a declaration. Okay, so here if you want to define the method, you can also define over here. Okay, so the JSP declaration tag is mainly used to declare your field, and whatever you write inside this JSP declaration tag, it will not be considered part of your service method. Remember that we know that when we convert JSP page, or when we translate JSP page, it will be converted to our servlet page. Now the servlet page is auto generated, so whatever you write inside your JSP page, it will be updated into your servlet page. So when you declare anything inside your JSP page, it will not be considered as your part of your service method. So remember this sentence. Okay, so it doesn't get memory at each request. The fourth one is JSP comment. So comment is used for documentation. So for the program readability, so generally we define HTML comment in such way, Java comment in such way. So how JSP comment is defined? So when you want to comment anything inside your JSP page, you can directly use dash dash, and whatever the text you want to write, you can write over here, and you can close it directly, dash dash percentage angular bracket. So the JSP comment tag tells the JSP container to ignore the comment part from compilation. So when you run your JSP program, it will not consider as during your compilation time. It is just used for your readability purpose. Okay. Then comes JSP scripting element example. So for example, I have a JSP page like HTML body. Now I want to use comment inside our JSP page. So we have seen the syntax of JSP comment. So for example, we are using scriptlet tag over here to write Java code, and then after we are commenting JSP scripting element. Then if I want to discuss declare anything, so I will make use of exclamation mark over here, integer I equals to 0. Then I am using scriptlet tag. So scriptlet tag is defined in this manner, so I plus plus, and then after I am writing some content, for example, welcome to the world of JSP, and then after I want to output some data on the browser, so I can directly use this expression tag over here, or you can use out.println. So this example basically shows how different scripting element are used over here. Okay, so you can see the output. So it will print, we have declared integer I equals to 0, then after I plus plus, and then after we are calling the value of I, so it will print something like this way. Okay, so I hope you are getting this scripting element. So it is important from exam point of view also. Next come JSP directives. So JSP directive is very important. So in order to direct your JSP page, we need to understand the JSP directive. So we are using different types of JSP directives in our JSP page that instructs our page to perform some action. So basically JSP directive will instruct the JSP container about your
JSP page. So read out here that JSP directive provides direction and instruction to the container, telling it how to translate a JSP page into the corresponding servlet. मतलब आप समझिए JSP directive उसका नेम क्या सजेस्ट करे, डायरेक्ट, यानी डायरेक्टिंग योर JSP. तो JSP पेज आप जब भी बना रहे हो तो उस पेज के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको इंस्ट्रक्ट करनी है आपके कंटेनर को, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप बता सकते हो किसका यूज़ करके, JSP डायरेक्टिव का यूज़ करके. तो देखिए JSP इंजन हैंडल्स डायरेक्टिव्स एट दी ट्रांसलेशन टाइम, यानी जब आपका पेज JSP पेज आप कंपाइल करते हो तो कंपाइलेशन के ड्यूरिंग दैट कंपाइलेशन टाइम JSP डायरेक्टिव का यूज़ होता है. और वो डायरेक्टिव जो हम देख रहे हैं यहाँ पर पेज इंक्लूड एंड टैग लाइब्रेरी, सो वो डायरेक्टिव का यूज़ करके JSP वो पेज को इंस्ट्रक्ट करेगा कि भाई कंटेनर आपको ये काम करना है. ठीक है. सो बेसिकली JSP डायरेक्टिव हम पेज की इंफॉर्मेशन को या पेज की इंफॉर्मेशन कंटेनर को बताने, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, JSP डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज पेज डायरेक्टिव, द सेकेंड इज इंक्लूड डायरेक्टिव एंड द थर्ड वन इज टैग लाइब्रेरी. So we will discuss tag library later on. Today we will discuss page and include directive. So उसका सिंटेक्स देखिए आप कैसे डिफाइन करते हैं डायरेक्टिव. सो जब भी आप कोई पेज क्रिएट करते हो JSP पेज, तो वहाँ पर सबसे ऊपर आपको ये डायरेक्टिव देखने को मिलेगी. आई विल शो यू एग्जांपल ऑफ इट. सो कैसे डिफाइन होता है, आपको लिखना है क्या, @ नाउ देखिए अगर आपने स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ किया और @ मेंशन नहीं किए, ठीक है, सो इट विल बी कंसिडर एज योर स्क्रिप्टिंग एलिमेंट. और उसके बाद अगर आपने डायरेक्टिव लिखी है तो आपको वो एरर देगा. सो इन ऑर्डर टू यूज़ दिस डायरेक्टिव आपको क्या करना है कि भाई परसेंटेज के बाद आपको @ का यूज़ करना है. ठीक है. और उसके बाद आपको जो डायरेक्टिव ऊपर 3 डायरेक्टिव अवेलेबल है उनका आपको नेम स्पेसिफाई करना है. एंड देन आफ्टर वो पर्टिकुलर डायरेक्टिव के साथ जो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है वो एट्रीब्यूट आपको स्पेसिफाई करना है. और उसके साथ आप कोई वैल्यू जो असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू को आप असाइन कर सकते हो. ठीक है. तो ये उसका सिंटेक्स है, डायरेक्टिव को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं. सो पेज डायरेक्टिव स्पेसिफाइज योर समथिंग अबाउट एंटर पेज. तो समथिंग अबाउट एंटर पेज क्या है तो हम आगे देखते हैं. सो पेज डायरेक्टिव बेसिकली हम पेज को डायरेक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं. यानी आपको अगर किसी पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पेज डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे. सो कैसी इन्फॉर्मेशन, लाइक सपोज अगर आपको पेज के अंदर आपको जावा पैकेज इंपोर्ट करवाना है तो आप इस तरह से आप इंपोर्ट करेंगे. ठीक है. जैसे आपको पेज के अंदर एक्सेप्शन को एरर हैंडल करने के लिए आपको अगर लाइक डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन वगैरह जो है ओकर हो रही है उसके बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पेज को देनी है तो उसके लिए आप एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे. आपको अगर डिफाइन करना है कि आपका कंटेंट टाइप यानी जो ब्राउज़र के ऊपर आप कंटेंट लिखोगे वो किस टाइप का है वो आप डायरेक्टली आप यहाँ पर बता सकते हो. कंटेंट आपका टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज हो सकती है. सो डिफरेंट कंटेंट टाइप्स अवेलेबल है तो उन सारी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो. फिर आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपका जो पेज जो है वो आपका जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहा है. सो सी होता क्या है कि बेसिकली अगर हम JSP पेज इंक्लूड कर दे तो दैट इज़ ऑप्शनल, इफ़ यू राइट और नॉट राइट दैट पेज विल बी कंसिडर्ड एज योर जावा पेज ओनली. ओके. सो आप अलग से आप लैंग्वेज टैग का यूज़ करके आप बता सकते हो कि भाई जावा लैंग्वेज में हम यूज़ कर रहे पेज में. सो बेसिकली पेज डायरेक्टिव का यूज़ क्या होता है, टू गिव पेज इंफॉर्मेशन टू JSP कंटेनर. ठीक है. सो इस तरह से डिफाइन होता है. @पेज उससे रिलेटेड एट्रीब्यूट और उसके बाद उसकी वैल्यू. सो एट्रीब्यूट यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल है, जैसे इंपोर्ट है, इंपोर्ट के बाद आपको यूज़ करना है इक्वल्स टू करके डबल कोट के अंदर आपको लाइक java.sql पैकेज हमें चाहिए तो java.sql पैकेज का हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू यूज़ मल्टीपल पैकेज तो आप कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है. एक चीज़ याद रखना हमेशा कि भाई इंपोर्ट पैकेज ही एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो मल्टीपल टाइम्स आप डायरेक्टरी के अंदर यूज़ कर सकते हो. ठीक है. सो ये सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है, इंपोर्ट, लैंग्वेज, एक्सटेंस, सेशन, इज थ्रेड सेफ, इज एरर पेज, कंटेंट टाइप, ऑटो फ्लश एंड एट द लास्ट बफर attribute. Now you will see some important attributes that are necessary to understand. That is, the first one is import attribute. उसके बाद आता है session attribute,
उसके बाद आता है एरर पेज एंड उसके बाद आता है इज एरर पेज एंड एरर पेज। नाउ देखिए, अगर आपको कोई पैकेज इंपोर्ट करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट एट्रीब्यूट। सो लैंग्वेज एट्रीब्यूट यानी आप जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, वो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बताना है कि भाई मैं जावा लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, तो आप डायरेक्टली इस तरह से एट द रेट पेज, उसके बाद आपको ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो लैंग्वेज का आपको यूज़ करना है एंड इक्वल्स टू जावा, जावा आपको वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड, यानी बेसिकली हमें पता है कि हमारा एट द एंड जेएसपी पेज हमारा सर्वलेट क्लास में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आपको किसी क्लास को एक्सटेंड करवाना है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली उस क्लास को यूजिंग एक्सटेंड एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। देन सेशन एट्रीब्यूट, सो सेशन अगर आपके पेज में एचटीटीपी सेशन अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए हम डायरेक्टली ए एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडल करना है तो उसके लिए हमें, अगर पेज में एरर्स आ रही है तो वो एक्सेप्शन हैंडल करना है तो उसके लिए एरर पेज एंड इज एरर पेज का हम यूज़ करेंगे। वो हम आगे अलग से जेएसपी एक्सेप्शन के अंदर वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो कंटेंट टाइप जो हमें अभी आगे देखा कि भाई कंटेंट टाइप मेरा कौन सा है, टेक्स्टलेस एचटीएमएल, वो हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। सो बेसिक इंपॉर्टेंट कौन से, इंपोर्ट, देन आफ्टर सेशन एंड एरर पेज एंड इज एरर पेज, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सो देखिए, ये है मेरा पेज डायरेक्टिव, पेज के अंदर किस तरह से यूज़ है। तो आप जो, सो आप देख सकते हो एट करके पेज लैंग्वेज आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो जावा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा, आपको स्पेसिफाई नहीं करना चलेगा। कंटेंट टाइप आपको स्पेसिफाई करने का, भाई टेक्स्टलेस एचटीएमएल, यानी आप जब भी कोई जेएसपी पेज क्रिएट करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी कंटेंट टाइप लैंग्वेज वगैरह आपके वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वो सारे एट्रीब्यूट्स आपके उसके अंदर आ जाएंगे। अलग से अगर आपको डिफाइन करना है कि भाई इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको देना है, तो इस तरह से आप इंपोर्ट स्टेटमेंट भी ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देखते हैं इंक्लूड डायरेक्टिव के बारे में। सो इंक्लूड डायरेक्टिव हमने जैसे सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस का यूज़ किया था, फॉरवर्ड और इंक्लूड मेथड। सो इंक्लूड के अंदर हमने देखा था कि भाई अगर हमें किसी पेज का रिसोर्स, अगर हम किसी पेज का मीन्स कि आप, वो पेज आपका एचटीएमएल हो सकता है, वो पेज आपका जेएसपी हो सकता है, वो पेज आपका सर टेक्स्ट फाइल हो सकती है। तो वो कोई रिसोर्सेज अगर आपको पर्टिकुलर पेज के अंदर इंपोर्ट करवाना है तो आप डायरेक्टली इंक्लूड डायरेक्टिव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो जनरली क्या है कि भाई कोड रीयूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। तो बार बार हमें सेम कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पेज अवेलेबल है, ठीक है। 100 पेज के अंदर आपने ऊपर का हेडर आपको पता होगा कि भाई होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट्स अस, वो सारे पेज जो है वो हर एक पेज के ऊपर यूज़ होने, और नीचे फुटर के अंदर आपने कोई अपनी मैप का यूज़ किया है, आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाले, तो आपको पता है कि वो हर एक पेज के ऊपर मुझे डिफाइन करने हैं। तो आप क्या करोगे कि हर एक पेज के ऊपर वो सारी वो कोडिंग नहीं लिखोगे, तो आप क्या करोगे भाई, दो फाइल अलग से मैं बना दूंगा। एक फाइल में दे दूंगा नाम हेडर डॉट जी एस पी। सो हेडर डॉट जी एस पी के अंदर जो मेरा होम बटन, अबाउट अस बटन, कॉन्टैक्ट बटन है, उसका पूरा कोड मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा या प्लेस कर दूंगा, ठीक है। और फुटर के अंदर जो मेरे मैप का जो एपीआई वगैरह जो मैंने यूज़ करके जो मैप का कोडिंग किया हुआ है, ठीक है। सो मुझे पूरा गूगल मैप के बारे में वहाँ दिखाना है, एड्रेस के बारे में मुझे दिखाना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं फुटर डॉट जेएसपी के अंदर प्लेस कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि भाई हर एक पेज के ऊपर आपको वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस तरह से वो फाइल को आप इंक्लूड करवा सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, हाउ टू, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंक्लूड डायरेक्टिव। सो इन ऑर्डर टू इंक्लूड some file, okay, or in order to include any resource inside your JSP page, you can directly use include directive. So इसका एडवांटेज क्या है कि कोड रीयूजेबिलिटी, यानी बार बार डेवलपर को कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखो डायरेक्टिव है इसलिए एट द रेट, उसके बाद आपको इंक्लूड, उसके बाद आपको फाइल एट्रीब्यूट, और जो फाइल आपको इंपोर्ट करवानी उस फाइल का नेम, ठीक है। So this was today's session. Thank you and God bless you all.